Okay. Let us solve this second. If a body of mass m is thrown with the velocity u at an angle 30 degree to the horizontal, and another body b of mass m of same mass is thrown with the same speed at an angle 60 degree to the horizontal, then the ratio of range of A to B is, तो देखो यहाँ पे range of A and B, एक बॉडी जो है वो 30 डिग्री पे थ्रो किया और दूसरा जो है वो 60 डिग्री पे थ्रो किया, तो ऐसे हालत में रेंज उनका जो मिलेगा वो सेम ही होगा बिल्कुल. So don't need to think about anything. We can conclude that since this 30 degree and 60 degree are the complementary angles, we can say that the range will be the same, and that's why the ratio of range will be the 1:1, no doubt. ये देख लो, a projectile can have the same range r for two angles of projection if t1 and t2 are the time of flights in the two cases. Then what is the product of t1 and t2? Can you find it out? See, since the projectile can have the same range for two angles of projection, that means those two angles of projection must actually be, one of which must be theta, another one should be 90 minus theta. Correct है? तो एक एंगल होगा थीटा और दूसरा होगा 90 माइनस थीटा. और जब थीटा से थ्रो करते हैं तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है उसको उन्होंने t1 बोल के रखा है, और जब 90 माइनस थीटा के साथ उसको थ्रो करते हैं तो उस समय जो एंगल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है उसको t2 बोल के रखा है. तो t1 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2u इंटू साइन थीटा अपॉन g. करेक्ट है? दूसरी तरफ t2 के लिए फॉर्मूला होगा 2u, same formula, only theta is to be replaced by 90 minus theta here, so that we get this 2u into sine 90 minus theta upon g, so that we can get this t2 to be actually equal to 2u cos theta upon g. Correct है? So this will be the value of t2. And now if we just multiply t1 with t2, then we can get that 2u sin theta upon g into, here it is again 2u cos theta upon g. Correct है? हेलो, गुड इवनिंग. हाँ लेक्चर में ठीक है. ओके. Okay, so basically this will be simplified as अभी 2 into 2 कितना बन रहा है 4. Okay, but just wait here. If we see carefully, then this 2 into sin theta into cos theta, ये जो पूरा प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, ये देखो, ये प्रोडक्ट मतलब ही एक्चुअली क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब ही sin 2 थीटा बनता है. बराबर है? तो चलो ठीक है, u स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, u into u becomes u square, and sin 2 sin theta into cos theta becomes actually sin 2 theta. Correct है? And that is to be divided by g as it is, and what we left is, it is 2 and g extra, and this is nothing but we know that it is the formula for r, that is the range of projectile. So we can conclude that this will be actually 2r by g, which is already there in this option 2. Okay, because they are just asking what is it proportional to. तो ये t1 t2 किसके साथ प्रोपोर्शन में है, यही हमको निकालना है. हमने ऑलरेडी t1 t2 का एक्सप्रेशन निकाल दिया in terms of r, so we can get that this t1 t2 is actually proportional to r, which is clear from this second. Okay, चलो next one.
ये देखो ये कर सकते हो 11th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, two particles separated at a horizontal distance x as shown in the figure. ओके तो डायग्राम में हमको दिखाया जा रहा है कि the two particles are separated by the distance x, suppose like this. Okay, this is this distance x and they are projected at the same line, मतलब वो प्रोजेक्ट किए हमने with the different initial speeds, the time after which the horizontal distance between them becomes 0 is. तो देखो यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो the first particle is projected at an angle 30 degree with the horizontal and it is projected with the velocity u by root 3. Okay, and the second particle is projected at an angle 60 degree with the horizontal and it is projected with the velocity u here. Correct hai? Yes, so just we can see what we want to find out here is, see the last line in the question, the time after which the horizontal distance between them becomes 0 is, मतलब horizontal distance उनका 0 कभी बनता है उसके ऊपर हमको फोकस करना है. So basically क्या है ना कि इसका ये फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है इसका आगे बढ़ने का जो वेलोसिटी है, मतलब horizontal velocity जो है, horizontal component of velocity that can be obtained to be u by root 3 into cos 30. Correct है? This is the horizontal component of the velocity of this first particle. Okay, and what about this second particle here? इस second particle का जो horizontal component है velocity का, तो वो रहेगा actually u cos 60. Correct है? u into cos 60, but that will be actually negative because it will be moving in the backward direction here, negative direction of x axis के direction में वो जा रहा होगा और ये जो है वो forward direction में जा रहा है. करेक्ट है? यस. तो अभी इसमें देख सकते हो कि अभी इस इन वेलोसिटीज के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो कितने टाइम के बाद वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनके बीच में का 0 बनेगा, तो वो हमको चाहिए. दैट मींस सपोज वो टाइम जो है वो हम t मान लेते हैं. t टाइम के बाद वो इस पॉइंट पे आ जाते हैं और इसके बीच में का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 0 बन जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं. तो t टाइम के बाद क्या होगा, देखो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ये दिस होल थिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय t इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. करेक्ट है? और उसी टाइम t के अंदर ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हम बोल सकते हैं देखो u into cos 60 into t इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा. but whatever distance is traveled by this first particle and the second particle, both of these two add up together will give us x. ये दोनों का सम जो है वो x हमको मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा. ठीक है? तो देखो यहाँ पर से ये दोनों का सम अगर x एक्सपेक्टेड है तो इसको सॉल्व करने से हमको t का वैल्यू मिल जाएगा in terms of x. Let us solve this. So u by root 3 into cos 30. How much is cos 30? We know that it is root 3 by 2 into t as it is. Plus here it is u cos 60. We know that cos 60 is 1 by 2, right? And into t again. And that is going to be actually x. So that we can conclude this root 3 will get cancelled. And we'll be left with u by 2 t plus u by 2 t is equal to x. Means if we take this u by 2t plus u by 2t as 2 times of u by 2t, which is must be x, and 2 cancel, we get that ut is equal to x, which means t must be equal to x upon u as a final. Okay, which is going to be there in this option number 1 here. X upon u is going to be the correct option. समझा क्या ठीक से? चलो ठीक है. So next one. Let us try this 13th one. A body is thrown horizontally with the velocity root 2 gh from the top of a tower of height h. Okay, it strikes the level ground through the foot of tower at a distance x from the tower. The value of x is. Yes, इसके लिए तो हमने रेडीमेड फॉर्मूला बना के रखा है, अगर आपको याद है. What is the relationship between the height from which the body is projected horizontally
and the range up to which it strikes the ground at some distance r. तो ये h और r के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, हमने डिराइव किया था ना लास्ट टाइम. देखो क्योंकि u जो है u मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, और चलो u into small t gives us the x coordinate of this point. Okay, and at the same time if we use the second kinematical equation in the vertical direction, तो हमको मिलता है y is equal to minus half gt square. Correct है. And if we just put this value of t obtained from this first equation, that is x upon u, in this equation here, then we can able to get that y is equal to minus of half g into x upon u का whole square, which happens to be actually y is equal to minus of gx square upon 2u square. Correct है. And if we replace this y by h here, तो y के बदले h आ जाएगा, और माइनस माइनस चलो ठीक है, माइनस कैन बी ओमिटेड, एंड g into x square, x के बदले यहाँ पे क्या आएगा, r आएगा, तो इसलिए यहाँ पे r square, and that is to be divided by 2u square. This is going to be the relationship between h and r. Now here in this case we can see that the height is given to be h, so just replace this capital H by small h here, and g into r के बदले क्या रखना है हमको, डिस्टेंस x हमको रखना है, तो r के बदले x डाल दो, तो ये बन गया x स्क्वायर, एंड एट द सेम टाइम 2 times of u स्क्वायर. u के बदले हमको क्या रखना है, ये देखो, द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally, which is root 2 gh here. So if you put this root 2 gh and square the bracket, then we can be able to cancel this square root and square, so that we can get this h is equal to gx square upon 2 times of root and square cancel, and we are left with 2gh inside the bracket, right? So that this gg gets cancelled, and this h will be actually equal to x square by 4h, and since h is equal to x square by 4h, so cross multiplying this we get that 4h square is equal to x square, which means 2h is equal to x, taking the square root on both sides, and hence we get that x is going to be equal to 2h as a final, which is already there in the option number 3 here. Just check. Okay, just read this 16th question. A particle starting from the origin 0 0 moves in a straight line in the xy plane. Okay, 0 0 मतलब origin से start करने वाला particle straight line में move करता है xy plane में, और देखो क्या दिया हुआ है, the coordinates at latter time are root 3 comma 3, that the path of particle makes with the x-axis an angle of, okay, it's very easy now. See here, suppose this is the x-axis, y-axis, and suppose the particle starts from origin and moves in a straight line, and coordinates at later time are nothing but root 3 comma 3 here. So what will be the angle made by this line of particle with the x-axis? So ये angle theta हमको निकालना है. Simply we can just drop the perpendicular from this point on this x-axis here and get this distance to be root 3 and this height to be 3 only, so that we can apply formula for tan theta in this case here. So tan theta will actually be equal to opposite upon adjacent. So opposite is 3 and adjacent is root 3, which when taken the if we rationalize this, then we can get this root 3 upon, so 3 root 3 upon root 3 into root 3, which is 3, so that this 3 gets cancelled and we are left with this root 3 only. So tan theta equal to root 3 matlab theta must be equal to 60 degree, and that is going to be the answer which is present in option 4 here. Correct है?
चलो, a projectile is fired at an angle 45 degree with horizontal. The elevation angle of projectile at its highest point as seen from the point of projection is. Okay, समझा ठीक से? यहाँ पे elevation angle का मतलब क्या होता है? If suppose the projectile is fired from this point here at an angle of 45 degree with the horizontal. Okay, तो अब यहाँ पे जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, सपोज ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया उसका. ओके, तो उस समय उसका उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमको निकाल के दिखाना है. दिस इज सपोज अल्फा विच वी वांट टू फाइंड आउट. सो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये हमको ये डिस्टेंस चाहिए जो कि हाइट के बराबर होता है, और हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए जो कि r/2 के बराबर रहने वाला है. करेक्ट है? r/2. और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे एंगल 45 डिग्री से वो थ्रो किया हुआ है, तो 45 डिग्री से थ्रो करने के बाद r कितना बनता है हमको पता है ऑलरेडी. ओके, ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि जो 45 डिग्री के ऊपर थ्रो करने से जो रेंज है वो मैक्सिमम होता है, और वो मैक्सिमम रेंज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ h के बराबर हुआ करता है. तो ऐसे केस में tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ? tan अल्फा विल बी एक्चुअली इक्वल टू h अपॉन r/2, एंड सिंस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 2h अपॉन r. r मतलब ही r मैक्स एक्चुअली है, तो इसलिए वो 2h अपॉन r max which is 4h. so 4h अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो h कैंसल and we are left with 1/2. so tan alpha is equal to 1/2 means alpha must be equal to tan inverse of 1/2, which is already there in this option number 3 here. Okay, yes. See this question number 2. Aeroplane moving with horizontally with a speed 180 km per hour drops a packet, food packet, while flying at a height of 490 meter. The horizontal range of the packet is. Once again, simple formula. देखो यहाँ पे सपोज ये एरोप्लेन उड़ रहा है और यहाँ से वो पैकेट थ्रो करता है, तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाके वो पैकेट नीचे गिरेगा? दैट इज r here, and the height up to height from which the projectile is fired is h. तो r और h के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? अभी अभी हमने प्रूव किया था, याद है? तो हमने प्रूव किया था कि r is actually equal to u square upon, sorry, h is equal to, no, h is equal to u square sorry r square upon 2u square. ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास है. ठीक है, तो अभी इसमें से हमको निकालना क्या है? r निकालना है, राइट? तो इसको थोड़ा रीअरेंज करो सिंपली, तो हमको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर इंटू h, राइट? तो r स्क्वायर कैन बी इक्वल टू 2 इंटू u कितना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन? इट्स गोइंग टू बी 180 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो u इज गिवन टू बी 180 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज जिस वेलोसिटी के साथ एरोप्लेन मूव कर रहा होगा वही वेलोसिटी उस फूड पैकेट को भी मिल जाएगा, ठीक है, जब वो थ्रो किया जाएगा. तो इसलिए 180 किलोमीटर पर आवर को हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट? सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय दैट सो दैट वी गेट दिस 18 ones are 18 tens are, so that we get this simply 50 meter per second. So initial speed of that food packet was 50 meter per second. So if you put it here, then we get this 50 square, and that is to be multiplied with h, where h is going to be the height of the aeroplane, which is 490 meter here. So that
and that is to be divided by g also, क्योंकि r square चाहिए ना हमको, तो ये upon g भी आएगा. So this h is going to be 490 and that is to be divided by g which is 9.8 here. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे. तो देखो 50 का स्क्वायर बनेगा 2500 and 2500 multiplied by 2 comes out to be 5000, right? So this is 5000 and 9.8 और 490 ये टेबल में है एक्चुअली. 9.8 का 5 टाइम्स होता है 49. ओके, तो 9.8 1 जा 9.8 5 जा and here 0 as it is and here it is 50 again. तो ये कितना बन रहा है? 50 into 5000 बनता है 250000. करेक्ट है? यस. सो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिलेगा 500 मीटर. दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन 3 हियर. See this question number 3 also. 3 particles A, B, C are projected from the same point with the same initial speeds at an angles 30 degree, 45 degree and 60 degree with the horizontal respectively. Which of the following statement is correct? देखो 30 से और 60 से जो रेंज हमको मिलेगा वो सेम रहेगा और 45 से जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा. ओके, select the proper option then. The ranges of A and C are equal and less than B. करेक्ट है? A और C का रेंज इक्वल होगा और वो जो भी होगा वो B से मिलने वाले रेंज से छोटा होगा, क्योंकि B से हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगा क्योंकि B को हमने 45 डिग्री से थ्रो किया है. ये भी इजी है, आ जाएगा आपको. देखो, a body is thrown with some velocity from the ground. Maximum height when it is thrown at 60 degree angle to the horizontal is 90 meter. What is the height reached when it is thrown at an angle 30 degree to the horizontal? See here, first of all, it is thrown at an angle 60 degree. So उस समय का जो मैक्सिमम हाइट है तो वो है 90 मीटर. तो मतलब जब 60 डिग्री को से उसको थ्रो किया जाता है तो उसका जो हाइट हमको मिलता है वो है 90 मीटर. ये 90 मीटर है और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है. ओके, अभी जब 30 डिग्री से थ्रो किया जाएगा तो उस समय उसका रेंज तो सेम ही मिलेगा हमको. ये देखो, रेंज सेम ही मिलने वाला है, बट ओनली डिफरेंस इज द हाइट. तो h हमको निकालना है, h डैश यू कैन से. तो अभी देखो h और थीटा में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको पता है ऑलरेडी. h इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. करेक्ट है? तो h पहले कितना है? h 90 और u तो हमको पता नहीं. चलो ठीक है, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 बराबर divided by 2g as it is. And in the second case we can see the height is to be found out but the angle is given to be 30 degree. करेक्ट है? सो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमको यूज करना है फिर से. सिर्फ यहाँ पे h के बदले क्या आएगा? h dash which is to be found out. So this is h dash which is going to be equal to u square into sin square 60 के बदले क्या आएगा यहाँ पे? 30 and divided by 2g kept as it is. So if we give this equation number 1 and equation number 2 and if we take the equation 2 divided by equation number 1, तो अगर हम equation 2 को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, h dash upon h dash upon 90 will be equal to
तो ऊपर में आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u square sine square 60 upon 2g. So that 2g gets cancelled and u square also gets cancelled, and we are left with h dash upon 90 is actually going to be equal to sine square 30 upon sine square 60, which is 1 by 2 का होल स्क्वायर जो कि 1 by 4 बनता है, और साइन 60 कितना बनता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर बनता है 3/4, करेक्ट है. So again this 4 gets cancelled and we'll be left with simply 1 by 3 here. So if h dash upon 90 is equal to 1 by 3, then h dash must be equal to what? 1 by 3 times of 90, which has to be 30 meter, which is option number B here, 3 here. ये देखो 13th वाला, the particle is projected at an angle 45 degree from the 8 meter before the foot of a wall. Okay. Yes. Just touches the top of the wall and then falls the ground opposite side or at a distance 4 meter from the wall. Then what is the height of the wall is? तो देखो ये suppose y axis, x axis and this is the wall. Okay, ये समझो wall है, इसका height हमको पता नहीं, let us take it as y. Okay, so it is given that the particle is projected at an angle 45 degree, तो 45 डिग्री पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया, और अभी ये जो है इस वॉल के साथ यहाँ पे टच करता है, जस्ट टचेस द वॉल 8 मीटर बिफोर द फुट ऑफ द वॉल, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 मीटर, क्योंकि जहां से हमने उसको प्रोजेक्ट किया वो पॉइंट वॉल से 8 मीटर दूरी पे है. ठीक है, यस, और एट द सेम टाइम it touches the wall and then falls on the opposite side at a distance 4 meter from it, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट है. तो हमको इस y का कोऑर्डिनेट निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, हाइट ऑफ द वॉल वी हैव टू फाइंड आउट. हाउ विल यू गेट दैट? See here, what will be the coordinates of this point with respect to this coordinate system? Tell me. इस point P के coordinates क्या रहेंगे? तो देखो ये x coordinate उसका रहेगा 8 मीटर. Do you agree with this? 8 मीटर. And the y coordinate उसका रहेगा y, जो कि हमको find करना है, right? So that means this point lies on the trajectory of the projectile. So if we would find out the equation of trajectory, तो trajectory का equation क्या होता है? देखो y is equal to x into tan theta minus gx square upon 2u square into cos theta, ऐसा होता है. और एक इक्वेशन है हमारे पास जो यहाँ पे बेटर होगा यूज करना, क्योंकि देखो y is equal to x tan theta into bracket 1 minus x upon r. ये वाला जो इक्वेशन है वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे r हमको पता है. समझा कैसे? ये जो टोटल है 8 + 4, इन दोनों का जो सम है वो r बनने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे y हमको निकालना है, और यहाँ पे x कितना है 8 है देखो, और tan थीटा कितना है 45 है, और x is again 8 and that is to be divided by r which is 12. So if we just simplify this further, then we get this y is equal to 8 into 1 into bracket 1 minus 8 by 12, which is going to be 2 by 3, right? So that is 1 minus 2 by 3 comes out to be 3 minus 2 by 3, मतलब 1 by 3, correct है? So it's going to be 8 into 1 by 3, which is actually going to be 8 by 3 meter. This is going to be actually the height of that wall, which is already available in this option number 3 here. Okay. Yes, just try this 12th one. A projectile
of mass m is fired with the velocity v from the point as shown in this figure. Okay, neglecting the air resistance, what is the change in momentum when leaving point P and arriving at point Q here? मतलब यहाँ पे P से Q तक जाने के टाइम तक इस पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज कितना होता है, वो हमको ढूंढ के निकालना है. See here, this question can be solved somewhat in detail. See, suppose this is the projectile which is thrown with an angle theta. वो एंगल दिया है क्या हमको? Yes, it's 30, right? So चलो ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे थीटा ही मान लेंगे. Angle is theta and it is fired with the velocity u here. Okay, and when it completes the projectile motion and falls back on the ground at this point here, it will also be making an angle theta with this horizontal here also, and because of that we can show its velocity to be directed this way, which will be making an angle theta with the horizontal once again. And now if we try to resolve these vectors, this u bar into two components and try to express it in terms of I bar and j bar, then we'll get this as u bar. मतलब u bar जो है वो कैसे मिलेगा हमको, इसको initial velocity बोल देंगे, ठीक है ना, u bar, and here the velocity will be v bar, which is going to be the final velocity. Okay, they are same in magnitudes. Remember, just because of the law of conservation of energy, we can say that while going from this point to this point here, the particle or projectile will gain kinetic energy, gain potential energy and lose kinetic energy. But while coming from this point to this point back here, it will lose the kinetic energy, lose the potential energy and gain the kinetic energy back. And hence its kinetic energy will be exactly same at this point as it is there at this point here. Okay, so kinetic energy is going to be the same. That means velocity is also going to be the same in magnitude only, but only the direction is different. So we can say the initial velocity here will be obtained as u cos theta into I bar plus u sin theta into j bar. ये हमको already पता है, because this can be resolved into two components. One is u cos theta and another one is u sin theta. Correct है? Yes. Now just resolve this also in two components. तो यहाँ पे अगर इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट हमको मिलता है वो फिर से v cos थीटा मिल रहा है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो एक्चुअली माइनस v cos थीटा मिलेगा. क्यों? क्योंकि इट्स नेगेटिव इन द डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अंदर है वो, इसलिए वो नेगेटिव बनेगा, माइनस आएगा वहां पे. तो माइनस v बार विल एक्चुअली बी इक्वल टू v cos थीटा इंटू I बार माइनस v sin थीटा. sin थीटा आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, so it will be v sin theta into j bar. Okay, and now but the magnitude of v is same as u, right है, तो v is same as u, so v bar के लिए क्या आएगा हमारा, तो देखो वो रहेगा u cos theta into I bar minus u sin theta into j bar. करेक्ट है. सो अभी यहाँ पे अगर हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम p2 bar minus initial momentum, that is p1 bar, and momentum is actually the product of mass and velocity, so we can say this mass into velocity vector minus mass into initial velocity vector. So it will be actually mv bar minus mu bar, where m can be taken common and v bar minus u bar will be left inside. So now if we just subtract this v bar and u bar here, so v bar के बदले क्या आने वाला है, देखो वहां पे, तो वो बनने वाला है v cos theta, u cos theta into I bar minus u sin theta into j bar. Okay, minus u bar के बदले आएगा देखो u cos theta into I bar minus plus u sin theta into j bar. Correct है? And then we can just open the bracket and get this as u cos theta into I bar
minus u sin theta into j bar minus u cos theta into I bar minus u sin theta into j bar, so that this u cos theta into I bar and minus u cos theta into I bar gets cancelled, and what we are left with is simply this minus u sin theta j bar minus u sin theta j bar, which adds up to double. So that's where we can get this as minus 2u sin theta into j bar, and this can be written as 2mu minus 2mu sin theta into j bar. And here minus j bar shows that this change in momentum is directed downwards, okay, in the negative direction of y-axis. And in magnitude, the change in momentum will be actually simply 2mu into sin theta. No need to take this j bar as well as minus sign because they show the direction only. Okay, so this 2m into u into sin theta. Theta कितना दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, तो अगर हम डाल देंगे तो sin 30 डिग्री कितना बनता है 1/2. सो इसलिए फिर यहाँ पे डेल्टा p का जो वैल्यू है वो 2mu into 1/2 मिलके mu बन जाएगा. So mu will be the value of change in momentum in this case. That means it is going to be mv in this case because उन्होंने u दिया ही नहीं ना, तो इसलिए mv will be the change in momentum here. Okay, so let us stop here, and all these are the MCQs which are based on projectile motion. Okay, तो projectile motion के ऊपर based MCQs हमने यहाँ पे किए. So next time हम uniform circular motion, ये वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का, वो स्टार्ट करेंगे, which is the last topic in this chapter. Okay. Yes. और